नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. संसदेचें पावसाळी अधिवेशन सुरू जालें. हें अधिवेशन 21 ऑगस्टा मेरेन चलतलें आनी तातूंत 21 बसका जातल्यो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी भलायकेच्या कारणावेल्यान आपल्या पदाचो राजिनामो दिला. संसदेची दोनूय सभाघरां आज मेरेन स्थगीत केल्यात. विरोधी पक्षांनी वेगवेगळ्या प्रस्नांचेर केल्ल्या बोवाळाक लागून लोकसभा स्थगीत दवरली. कोंकण रेल्वेन पयलेच फावट सांगलां की महाराष्ट्रांतल्या कोलाड आनी गोंयांतल्या वेर्णा मजगतीं खासगी गाडयां खातीर विशेष रोल ऑन रोल ऑफ रो ट्रेन सेवा 23 ऑगस्ट ते 11 सप्टेंबर मजगतीं चलतल्यो. आतां पुराय खबरो. संसदेचें पावसाळी अधिवेशन सुरू जालें. हें अधिवेशन 21 ऑगस्टा मेरेन चलतलें आनी तातूंत 21 बसका जातल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसदेचें पावसाळी अधिवेशन फलदायी आनी समृद्ध चर्चांनी भरिल्लें आसतलें अशी आशा व्यक्त केल्या. हाका लागून देशाची लोकशाय बळकट जातली अशें तांणी म्हळें. देशान अंतरिक्ष मळार केल्ल्या कामगिरी विशीं तांणी म्हळें की मानसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है और जब मैं कहता हूं कि सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना ये हर देशवासी के लिए गौरव की पल है. पावसाळ्याचो हंगाम बरो चालू आसप अर्थवेवस्थे कडेन कसो जुळटा हें सांगतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां की देश में मौसम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है. कृषि को लाभदायक मौसम की खबरें हैं और बारिश किसानों की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इतना ही नहीं हर परिवार की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है. अब तक जो मुझे जानकारी दी गई है उस हिसाब से पिछले 10 वर्ष में जो पानी का भंडार हुआ है इस बार वो करीब 3 गुना हुआ है, जिसका आने वाले दिनों में भी देश के अर्थतंत्र को बहुत लाभ होगा. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरवाती आदी माध्यमांकडे उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां की हें अधिवेशन देशा खातीर अभिमानाचो खीण आनी आमच्या सामुहीक कामगिरीचो खरो उत्सव आसा. पुराय जगान भारताच्या लश्करी सामर्थ्याचें बळ पळयलें. ऑपरेशन सिंदुरान भारतीय सैनिकांनी 100% यश मेळोवन दहशतवादा फाटल्या सूत्रधारांक तांच्या लिपिल्ल्या सुवातींतल्यान उद्ध्वस्त केलें अशें तांणी म्हळें. पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार पूरी दुनिया चौंक उठी थी. आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया. गरिबी निर्मूलन एनडीए सरकारान वयर काडिल्ली अर्थवेवस्था, नक्सलवादा आड कारवाय हे विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयले. 30 करोड़ गरीबों का गरीबी से बाहर निकलना, जिसको विश्व की अनेक संस्थाएं सराहना कर रही है. देश में एक जमाना था 2014 के पहले जब इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में हुआ करता था. आज 2% के आसपास आकर के देश के सामान्य मानवी के जीवन में राहत बन गया है, सुविधा बन गया है. 25 करोड़ गरीबों का गरीबी से बाहर निकलना, जिसको विश्व की अनेक संस्थाएं सराहना कर रही है. देश में एक जमाना था 2014 के पहले जब इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में हुआ करता था. आज 2% के आसपास आकर के देश के सामान्य मानवी के जीवन में राहत बन गया है, सुविधा बन गया है. माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं. हमें गर्व है कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है. देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी भलायकेच्या कारणावेल्यान आपल्या पदाचो राजिनामो दिला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां बरयल्ल्या पत्रांत धनकर हांणी म्हणलां की भलायकी सेवेक प्राधान्य दिवपाक आनी वैजकी सल्ल्याचें पालन करपाक तांणी बेगोबेग भारताच्या उपराष्ट्रपती पदाचो राजिनामो दिला. तांच्या कार्यकाळांत राष्ट्रपतीन दिल्ल्या अढळ तेंक्या बद्दल तांणी तांचे आभार मानले. धनकर हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी आदरणीय मंत्रिमंडळाचे मनापासून आभार मानले. तांणी सांगलां की प्रधानमंत्र्यांचें सहकार्य आनी तेंको अमूल्य आसा आनी तांकां तांच्या कार्यकाळांत बरेंच कितें शिकपाक मेळ्ळां. तांणी सांगलां की सगळ्या संसद सदस्यां कडच्यान तांकां मेळिल्ले माया, विश्वास आनी मोग सदांच यादीत उरतलो आनी रुजतलो. ह्या महान लोकशाहीत उपराष्ट्रपती म्हणून मेळिल्ल्या अमूल्य अनुभवा बद्दल ते मनापासून आभारी आसात अशें धनकर हांणी म्हणलां. ह्या म्हत्वपूर्ण काळांत भारताच्या उल्लेखनीय अर्थीक प्रगती आनी अभूतपूर्व विकासाचे साक्षीदार जावप आनी तातूंत सहभागी जावप हो एक विशेष धिकार आनी समान आसा. ह्या देशाच्या इतिहासाच्या ह्या परिवर्तनकारी युगांत सेवा करप हो खरो सन्मान आसा अशें तांणी म्हळें. संसदेची दोनूय सभाघरां आज मेरेन स्थगीत केल्यात. विरोधी पक्षांनी वेगवेगळ्या प्रस्नांचेर केल्ल्या बोवाळाक लागून लोकसभा स्थगीत दवरली. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचेर आनी ऑपरेशन सिंदुराचेर बेगोबेग चर्चा करची अशी मागणी विरोधी वांगडी करतले. सांजवेळा 4 वरांचेर स्थगीत जाले उपरांत सभाघर परतून सुरू जाले बरोबर काँग्रेस, डीएमके, समाजवादी पक्ष आनी हेर विरोधी पक्षांनी घोशणा दिवपाक सुरवात केली. सभापतीन निशेध करपी वांगड्यांक सभाघराची कार्यवाही चालू दवरपाचें आवाहन करून सरकार चर्चे खातीर तयार आसा आनी कामकाज सुरू दवरचें अशें सांगलें. बोवाळाच्या वातावरणाक लागून सभापतीन सभाघर आज मेरेन स्थगीत केलें. गुजरातान घडिल्ल्या विमान अपघाता विशीं उलयतना केंद्रीय नागरी विमानन मंत्री राम मनोहर नायडू हांणी म्हणलां की On behalf of the ministry and from the regulator DGCA, we ensure that there is no negligence and there is no incompetence on any of the processes and everything is very thoroughly monitored. And if there is anything which occurs due to negligence, then we take serious action on both the operator and any necessary person and we impose penalties, suspensions, all the process of enforcement is also duly listed. कोकण रेल्वेन पयलेच फावट सांगलां की महाराष्ट्रांतल्या कोलाड आनी गोंयांतल्या वेर्णा मजगती खाजगी गाडयां खातीर विशेष रोल ऑन रोल ऑफ रो ट्रेन सेवा 23 ऑगस्ट ते 11 सप्टेंबर मजगती चलयतले. कोकण रेल्वेन जारी केल्ल्या प्रसिद्धी पत्रका प्रमाण प्रत्येक ट्रेनींत प्रत्येक ट्रिपांत 40 मेरेन गाडयो भरपाक शकतात, जातूंत 20 वॅगनां पैकी प्रत्येकी 2 गाडयो भरतले. संलग्न 3 AC वा दुसऱ्या आसनाच्या डब्यांत प्रत्येक गाडयेक चडांत चड 3 प्रवासी प्रवास करपाची परवानगी आसतली. एकूणकार येरादारी खर्च 7,875 प्रवासी भाडें आकारतले. गणपतीच्या हंगामांत उत्सवाचो प्रवास सुलभ करपाक ही विशेष सेवा सांजे 5 ते सकाळीं 5 मेरेन चलतली. बुकींग काल सावन सुरू जाल्या आनी 13 ऑगस्ट मेरेन करपाक शकता. बांगलादेशाच्या इंटर सर्व्हिस पब्लिकेशन रिलेशन्स हांणी म्हायती दिली की काल दनपारां ढाकाच्या उत्तरा भागांत बांगलादेश हवाई दलाचें जेट विमान कोसळिल्ल्यान पायलट सयत किमान 20 जाणांक मरण आयलें. ISPR प्रमाण बांगलादेश हवाई दलाचें F-7 BGI विमान दनपारां 1 जावन 6 वरांचेर प्रशिक्षण उड्डाणा खातीर गेलें आनी त्या उपरांत रोखडेंच ढाकाच्या उत्तर भागांतल्यान मायलस्टोन स्कूल अँड कॉलेज कॅम्पसांत कोसळ्ळें. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. संसदेचें पावसाळी अधिवेशन सुरू जालें. हें अधिवेशन 21 ऑगस्टा मेरेन चलतलें आनी तातूंत 21 बसका जातल्यो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी भलायकेच्या कारणावेल्यान आपल्या पदाचो राजिनामो दिला. संसदेची दोनूय सभाघरां आज मेरेन स्थगीत केल्यात. विरोधी पक्षांनी वेगवेगळ्या प्रस्नांचेर केल्ल्या बोवाळाक लागून लोकसभा स्थगीत दवरली. कोकण रेल्वेन पयलेच फावट सांगलां की महाराष्ट्रांतल्या कोलाड आनी गोंयांतल्या वेर्णा मजगती खाजगी गाडयां खातीर विशेष रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सेवा 23 ऑगस्ट ते 11 सप्टेंबर मेरेन चलतल्यो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.